am Shikha. Welcome back to a SuperGrads YouTube channel. And today, quickly let's talk about the exams that you should be targeting alongside IPMAT Indore. तो IPMAT इंदौर से एज मेजोरिटी ऑफ यू ऑलरेडी नो कि आप IPM प्रोग्राम को पढ़ सकते हो फ्रॉम द रेप्यूटेबल IIM इंदौर बट अपार्ट फ्रॉम IIM इंदौर देयर आर सेवरल अदर यूनिवर्सिटीज बोथ IIMs and as well as non-IIMs which offer the IPM program but students do not have that much information about it. So today in this video we'll be covering management exams जिनके थ्रू आप आईपीएम प्रोग्राम भी पढ़ सकते हो एज वेल एज दोज एंट्रेंस एग्जाम्स जिनके थ्रू आप स्पेसिफिकली बीबीए एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, बीबीए प्रोग्राम को टारगेट कर सकते हो. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, लेट अस सी व्हाट आर द टॉप 8 colleges or 8 universities through which you can study the IPM program with IPMAT Indore scores. So first is obviously at the very top IIM Indore itself. But apart from IIM Indore, IIM Ranchi also accepts IPMAT Indore scores for their selection process. IPMAT Indore के scorecard से you can also take admission into IIFT Kakinada, which also offer IPM program. Then you also have Nalsar University of Law, Tapni Manipal, Nikmar University located in Pune, IFMR GSB at Kriya University located in Chennai, and lastly Nirma University. तो IPMAT इंदौर के scores से IIM इंदौर के अलावा these are the universities that you can also target. These universities also offer the IPM program. Now moving on to the main context or main agenda of today. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा कि आईपीमैट इंदौर के अलावा आईपीमैट रोहतक एंड जिपमैट के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं. बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव दिस इंफॉर्मेशन, IIM Rohtak and as well as two other IIMs, that is IIM Jammu and Bodh Gaya, also offer IPM program. तो IIM रोहतक से पढ़ने के लिए आपको IPMAT रोहतक का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है which is conducted in 2 rounds. First round is the aptitude test, this one, and the second round is the personal interview round. When we talk about the aptitude test, there are 3 sections that are asked. So first is quantitative ability, second is logical reasoning, third is verbal ability. तीनों ही सेक्शन से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फॉर ईच सेक्शन यू हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 40 मिनट्स. +4 and -1 is the marking scheme that is followed, meaning हर सही जवाब पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे एंड हर गलत जवाब पर 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब -1 की नेगेटिव मार्किंग है. So apart from your aptitude test, you also have to give a personal interview round to get selected in IIM Rohtak for the IPM program. अब JIPMAT exam के through there are 2 universities. So first is IIM Jammu and second university is IIM Bodh Gaya. Both these universities accept the JIPMAT scores for selection into their IPM program. जिपमैट के केस में एक एडेड एडवांटेज ये है कि देयर इज नो पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ओनली यू हैव टू गिव द जिपमैट एग्जाम. सो जिपमैट में 3 सेक्शंस है दोबारा. सो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड द थर्ड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इन दोनों सेक्शन से मतलब क्यूए से एंड DILR से 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड VARC से 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जिपमैट एग्जाम टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्जाम कंडक्ट होता है. अगेन द मार्किंग स्कीम इज द सेम एज IPMAT रोहतक, मतलब +4 की एंड -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है. एंड एज यू कैन सी इन द टेबल, द टोटल मार्क्स ऑफ द जिपमैट एग्जाम इज 400, मतलब 100 क्वेश्चंस का एग्जाम है, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड टोटल मार्क्स हैं 400. अब नाउ वी हैव अंडरस्टूड द मैनेजमेंट एंट्रेंसेस जो स्पेसिफिकली IIM बेस्ड है, बट अपार्ट फ्रॉम IIMs
There is also NFSU, that is National Forensic Sciences University, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम को पढ़ाते हैं. NFSU से अगर आपको IPM पढ़ना है तो आपको NFAT का एग्जाम देना होगा, दैट इज नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट. NFAT का एग्जाम पैटर्न भी समवॉट सिमिलर है. इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट होगा. MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया जाता है फॉर 100 क्वेश्चंस. द मार्किंग स्कीम फॉलोड इज +1 एंड -0.25, मीनिंग हर सही जवाब पर 1 मार्क मिलेंगे और हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे. There are several sections which are asked in the NFAT exam. So first you have general knowledge, second is logical reasoning and aptitude, third is mathematical reasoning, data interpretation, and lastly information and communication technology. So when I talk about IPM specifically, you have IIMs as well as non-IIMs universities जो IPM ऑफर करते हैं. बट अगर हम स्पेसिफिक BBA प्रोग्राम्स की बात करें, सो यू हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स that you should target if you want to singularly study the BBA अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. तो BBA की जब बात करें तो सबसे टॉप पर आता है CUET, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट. CUET was conducted first in the year of 2022. NTA is the conducting body of the CUET exam. और CUET आज की डेट में एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए. CUET के एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं एक बार. सो यू हैव 3 sections in CUET. फर्स्ट इज योर लैंग्वेज सेक्शन, सेकंड you have domain section, and third is the general test exam. Language section का भी further bifurcation has been done into 2 parts. तो 2 तरह की languages हैं, 2 sections हैं basically language के अंदर भी. You have section 1A languages and you have section 1B languages. Section 1A languages में total 13 languages हैं which are your regional languages. And section 1B में 20 languages हैं which is a mix of regional and foreign languages, and you have a choice to choose whichever language you want to give the exam in. अब next है domains. तो there are 27 domain subjects and domains basically आपके class 12th के subjects हैं जिनमें आपने पढ़ाई करी है. For example, अगर आप commerce background से belong करते हो तो accountancy, economics या business studies आपके domain subjects कहलाए जाएंगे. And third section है general test का section. तो general test is very similar to the other IPMAT sections that we talked about. मतलब quantitative aptitude आता है, logical reasoning है, analytical reasoning है, verbal ability is also asked, some current affairs questions are also asked in the general test exam. Now we'll talk about the number of questions. तो जो आपके पहले 2 sections हैं, that is section 1 and section 2, the total number of questions asked is 50 questions, and इन 50 questions में से कोई से भी 40 questions आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. 10 questions की आपके पास चॉइस होती है उन्हें स्किप करने का. whereas जनरल टेस्ट में 60 questions पूछे जाते हैं टोटल, उसमें से 50 questions आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड द अलॉटेड टाइम इज 45 minutes for section 1, 45 minutes again for section 2, and 60 minutes for the general test exam. यहाँ पर 45 और 60 डोमेन्स के सब्जेक्ट्स में मैंने इसलिए लिखा है. 60 minutes is allotted for subjects that involve mathematical calculations, जैसे मैथ्स itself, अकाउंटेंसी और फिजिक्स. मतलब ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैथ्स का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है उनके लिए 60 minutes मिलते हैं. बट फॉर ईच एंड एवरी अदर सब्जेक्ट जिसमें देयर इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व, यू विल बी अलॉटेड ओनली 45 minutes. एंड अगेन GT एग्जाम के लिए 60 minutes अलॉटेड है. अब CUET एग्जाम से यू कैन टारगेट टॉप यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर BBA और BMS programs. Apart from CUET, you have
NPAT एग्जाम फ्रॉम नारसी मुंजी। NPAT एग्जाम के थ्रू आप BBA कोर्सेज को टारगेट कर सकते हो फ्रॉम नारसी मुंजी। एंड एज यू कैन सी you again have three sections, that is quantitative aptitude, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड द टोटल टाइम दैट इज अलॉटेड फॉर द एग्जाम इज 100 मिनट्स। सो एज यू कैन सी टोटल मार्क्स इज 120, मतलब हर क्वेश्चन का एक मार्क है एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द NPAT एग्जाम। Last, I will talk about the SET exam, that is symbiosis entrance test. Symbiosis के through भी you can target n number of BBA undergraduate programs. And as you can see, first section is general English section. Second, you have quantitative aptitude section. Third is general awareness section. And lastly, you have analytical and logical reasoning section. There are total 60 questions asked in the exam. 16 questions English से, 16 questions quant से, 16 questions general awareness GK से and 12 questions logical reasoning के section से। Again, the total marks is 60, मतलब एक question एक mark का है and there is no negative marking in the SET exam as well. The time duration that has been allotted for the SET exam is 1 hour or 60 minutes. Apart from these exams, you also have Christ University entrance test, Xavier's admission test. If you are interested in knowing about the exam pattern, the curriculum of BBA courses of these colleges and entrance test, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल के एंट्रेंस टेस्ट बचे हैं जो आप BBA कोर्सेज के लिए टारगेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट IPM प्रोग्राम and the IPM colleges, again make use of the comment section below and I'll be very glad to make a video on your given suggestions. This brings me to the end of the video. Thank you everyone for watching.